एनिमल भी एक जो है ना वो निस्वार्थ प्रेम. Yeah, and especially dogs. If you have a dog, जिनके पास dog है उनको पता है that there's no love. Like they say there's no love like mom and dad. There's no love like a dog, you know. So Which is your favorite Gujarati actor? Malhar? Malhar, Dwanit, ये yes or बहुत गलत Pratik? question है. So it's a big no-no if any modeling agency or any agency is charging you say 500 rupees, 1000 rupees, हम आपको ये काम देंगे, वो 25,000, काम देंगे. 50,000. It's a soul connect, and that is what love is for me. It's selflessly just giving yourself. I only know to love like this, wildly, madly, truly, deeply. I don't know anything in between. I've always chosen घर का खाना. એટલે ભાખરી બટેટાનું શાક ઓળો રોટલો, you know, these were my favorite. जय श्री कृष्ण दोस्तों, योर वॉइस विद केयूर कड़िया में आपका स्वागत है. तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो है भक्ति कुबावत के साथ. वो एक गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में जानी मानी एक्ट्रेस, मॉडल और एंकर है. वो सिर्फ गुजराती इंडस्ट्री में भी नहीं, वो अभी बॉलीवुड में भी जा रही है. तो ये जो पॉडकास्ट है वो हमने इस पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें की है. मॉडलिंग के बारे में, एक्टिंग के बारे में, एंकरिंग के बारे में, उनके करियर के बारे में बात की है. गुजराती फिल्म इंडस्ट्री के जो अभी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट आने वाले उसके बारे में हमने बात की है. तो ये वीडियो आप पूरा देखें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. स्टे ट्यून. आपका स्वागत है मैम हमारे पॉडकास्ट में जो नाम है योर वॉइस विद केयूर कड़िया. कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं आपको देख के बहुत ही अच्छा हुआ अभी. आपको देख के वो मुझे सॉन्ग याद आ रहा है. मैं कॉलेज में था, मैंने आपकी मूवी देखी थी. फर्स्ट मूवी आपकी मैंने देखी थी विटामिन सी. माछलियों उड़े पतंगिया तरे हवा में रंग भरे. आहा, अभी ऐसा लग रहा है मुझे. Oh, that's so sweet. Thank you so much. आपके बारे में बताइए पहले. I always keep telling everybody I'm a simple girl with bigger dreams, not so simple dreams, and जूनागढ़ की शेरनी हूँ, तो of course you know दहाड़ बहुत ही आगे तक लेकिन जाएगा. आपका जन्म कहाँ पे हुआ है? क्योंकि सोशल मीडिया और गूगल कुछ अलग ही बता रहा है. Yeah. So I was born in Tanzania, Tanga, and after that we shifted to Junagadh because dad's family was in Junagadh. मतलब आप पहले से ही गुजराती हो? हाँ, पहले से ही गुजराती है, लेकिन हम लोग गुजराती ऐसे बोलते हैं. लाइक आई टेल यू हाउ टंजानियन और मे बी NRI speaks. તમને તો પછી ખબર છે ને, પહેલા ત્યાં આવ્યા હતા ને તને લાફો ચોરી દીધો. You know, like we speak like this, and I'm like, I've been raised like this to probably speaking dialogues in Gujarati films where it's typical Ahmedabadi was a challenge. કાવો કેવો લાગ્યો? કાવો તો જો ને તો બહુ જ સરસ લાગ્યો. મને તો જોઈ છે કે હું બધા જ દિવસ કાવો પીવું અને મસ્ત રહું. एंड आपने स्टार्ट कैसे किया? Oh wow, it's a very interesting story. I was studying in Bangalore, और Bangalore में, as you all know that you know, for Gujarati it's a life which is very different from what we live here. And मुझे भी ऐसा था कि मैं कॉलेज तो जा रही हूँ, 12-1 बजे फ्री हो जाती हूँ. Why not have my pocket money? And I think that's when in Bangalore people hunt for good faces in colleges. So I started getting modeling assignments, but then I had to come back to Gujarat. And my mom, मैं जूनागढ़ गई थी, मेरी मम्मी ने बोला कि फेमिना मैगजीन है, let's apply, you know, we might get some goodies and things like that. So हमने फेमिना मैगजीन में अप्लाई किया, thinking I'll get some goodies and maybe I'll win some contest. And that was a contest of being the cover page of फेमिना. जूनागढ़ में रहती लड़की जिसने मॉडलिंग की ही नहीं है, और to even aim for फेमिना मैगजीन was a dream which was difficult to achieve. Let's put it that way. You know, our goals always should be achievable. So मुझे लगा कि let's not aim for that, but maybe we'll be somewhere in between. And then I got a call saying that
we are planning to take you for top 3 and would you be allowed to come to Mumbai? So I spoke to my parents and मैंने बोला उनको कि ऐसी opportunity है and by God's grace my first photo shoot was for Femina magazine all India issue. और बात वहीं तक नहीं खत्म होती है. And while the shoot is happening, it's a dream for every girl कि वो racks पे racks कपड़े जा रहे लेकिन हैं. घर पे जैसे कि हमने बात करते हैं ना, कोई भी लड़की का ड्रीम होता है ये सब करना, तो घर पे मना नहीं बोलते लोग? आपके घर पे ऐसा मुझे कुछ नहीं हुआ? डॉक्टर बनना था. क्योंकि आपके फादर डॉक्टर है. Yeah, my father is a doctor, so I always wanted to be like him. फिर लगा कि नहीं यार, I like stars, so I want to be an astronaut. तो दूर दूर से मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं मॉडलिंग करूंगी और उसके बाद एक्टिंग करूंगी. सो अगर वो सोचा होता और तो इसके पहले MBA. हाँ that also happened accidentally, but yeah, so वही है कि वो मैगजीन पे we won the cover page and then obviously they allowed, they were very supportive. In fact, आज तक मेरे जितने भी मैगजीन्स में इंटरव्यूज आते हैं, जो भी न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते हैं, they all save it, they keep it and they share it to all their friends across the globe. So they are very immensely proud of my work, extremely supportive. They will never ask me कब घर आ रही हो. They'll never ask me, they'll let me decide, take the decision, and which is a great parenting technique, I would say, because they kind of trust me and trust my choices, which is a big deal. Obviously, whenever I get confused, I keep asking them, is it a right decision to take? And we discuss. The best part about our family is we communicate. तो बातें करोगे तो तुम सबको पता चलेगा कि कहाँ पे आप राइट जा रहे हो, कहाँ पे रॉन्ग जा रहे हो. अभी क्या कहते हैं पापा? I trust you. I think he's always trusted my choice, and अभी तो ऐसा point आया where he gets confused and he'll ask me, what do you think? What should I do? And I'm like, Papa, I'm taking your position now. So it's a blessing to have such family. And after winning the cover page, Femina gave us the wildcard entry to Miss India. They gave us 2-page interview. मेरी modeling career start हो गई. Eventually, I got into Clean and Clear, Fresh Face, and then MTV's India's Next Top Model. So all of that just came. I've never auditioned. I've never kind of given my profile to somebody that, hey, I am this or मैं ये कर रही हूँ. So I think the universe has been magical in my case. And जैसे modeling it's nice to model for brands, but there's this one point where आपको लगता है कि आपने सब achieve कर लिया, अब क्या? And meanwhile, while modeling, I used to host shows for my friends in IIM Ahmedabad and to all other colleges. And तब वहाँ पे एक event planner आया था, and he said, Bhakti, will you do a show for Vodafone? A commercial show. And I said, I do it for my friends and for fun, लेकिन मैंने commercially कभी shows नहीं किए. I never thought anchoring would pay me. And that then today, I think the journey has been absolutely amazing. Definitely, it was not a cakewalk. There's immense amount of hard work. And so I used to do my MBA with dual specialization. यानी सुबह मैं marketing की classes में जाती थी, रात को HR के classes, और सैटरडे संडे को अगर टाइम बचता था या दोपहर को टाइम बचता था, वहाँ पे मैं मॉडलिंग और शोज करती थी. सो तो आप फिटनेस को भी ध्यान में रखना पड़ता होगा मॉडलिंग में, एंड ऑफ कोर्स अपना हेल्थ है, वॉइस है, तो वो सब मेंटेन कैसे करते थे आप? एंड मॉडलिंग, स्पेशली हम मॉडलिंग के बारे में भी बात करते हैं, तो मॉडलिंग में क्या क्या ध्यान में रखना पड़ता है? आई थिंक मॉडलिंग में सबसे पहले तो वो ध्यान रखना होता है, और एनी प्रोफेशन दैट यू गेट इनटू, फर्स्ट यू नीड टू बी फोकस्ड एंड प्रोफेशनल. आपने अगर 5 बजे का टाइम बोला तो आप 5 साढ़े 5 के बीच आ ही जाओ, एंड विथ रिस्पेक्ट टू मॉडलिंग, ऑब्वियसली यू नीड टू हैव योर पोजेज राइट. You cannot be sitting like this. You need to sit straight, have that personality of yours, which is more confident. After that, I think, obviously, you have to do justice to the brands that you are associated with. So, modeling में it is not your face, it's the product that, आज अगर मैं एक कुर्ती की modeling कर रही हूँ, तो that is the focus. Eat right, sleep right, because then you'll also have baggy eyes, eventually if you don't sleep right. In my case, I've never diet. I've always chosen घर का खाना. એટલે ભાખરી, બટેટાનું શાક, ઓળો રોટલો, these were my favorite things. I feel
eating habits should be sustainable for your rest of your life. तो आज मैं प्रोटीन डाइट ही कर लूँ, you know, your body is not gonna be accepting just protein. You also need good carbs. So I think it's a mixture of various things, and also every body is different. आप 2 रोटी खा रहे हो, मैं भी 2 रोटी खा रही हूँ, लेकिन if I'm gaining weight, that means something is wrong. My metabolism is down. You have to obviously have one form of exercise. And also mental health, nobody speaks about that. You have to be mentally strong. बिकॉज वो हील्स पहन के आपको खड़े रहना है, और 1-2 घंटा नहीं, लाइक 8-10 घंटे. तो इवन दैट्स अ चैलेंज. You still have to look presentable, you still have to look beautiful, you still have to do your job, you still have to have that smile. Yani, this profession has zero error policy. You cannot go wrong. So a lot of pressure. So you have to be mentally and देखिए physically फर्स्ट स्टेप क्या stable. होता है हमको मुझे भी ज़्यादा पता नहीं है मॉडलिंग के बारे में, लेकिन कोई ऐसी कंपनियां होती है, उसको अप्रोच कैसे करें हम, या फोटोज भेजना पड़ता है, हाँ. क्या होता है वो? सो बेसिकली आपको पोर्टफोलियो बनाना होता है. पोर्टफोलियोज आर वेरी सिंपल. स्ट्रेट लुक में एक पिक्चर, माई साइड प्रोफाइल एंड फ्यू पोजेस. दैट्स इट. कोई भी मॉडलिंग एज एजेंसी आपसे अगर पैसा मांगती है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो मॉडलिंग एजेंसी रॉन्ग है. मैंने ज़्यादा तो सुना है ऐसा कि मॉडलिंग, एक्टिंग, मैंने Yeah. ऑडिशन में भी ऐसा होता है. तो अगर कोई पैसा मांग रहा है, यानी कि वो ग्रेट एजेंसी है ही नहीं. टेल मी कौन सी एजेंसी, इफ यू टॉक अबाउट यशराज फिल्म्स, मैं तो बड़ी बड़ी एजेंसी की बात कर रही हूँ. बहुत सारी एजेंसीज हैं मुंबई में. दे डोंट चार्ज, दे वांट कैरेक्टर्स, दे वांट पीपल टू फिट देयर कैरेक्टर, दैट्स इट. And they should pay us to kind of like give our talent to the world. So I think so it's a big no if any modeling agency or any agency is charging you say 500 rupees, 1000 rupees, हम आपको ये काम देंगे, वो 25,000 काम देंगे. 50,000 तक चले जाते हो लोग. Yeah. As an agency, you can always charge कि आप जितना कमा रहे हो उसके हम 5% as a commission fees charge करिए, 10%. But for registration and for, I think it's a big no. ओके. So it's a big red flag. यानी ये वाली गलत है, चौकड़ी. चौकड़ी. और फिर आपने होस्टिंग स्टार्ट किया. हाँ, सो मैं होस्टिंग भी करती थी, मॉडलिंग भी करती थी. यू नो, आई वाज लाइक ऑल रेडी कि चलो क्या काम आ रहा है मुंह में, सब करूँगी. एंड नॉट फ्रॉम द डे, फर्स्ट डे यू आर नेवर perfect. You have your flaws. I kept working on my voice modulation. I would start writing different sort of scripts to make sure I have my one right script. तब जाके पता चला यार scripted shows में मज़ा नहीं आ रहा. I have to be spontaneous. यानी I started working on my pronunciation, my poise. In my case, मुझे कुछ नया करना था हमेशा हर शो में. That actually helped me be the number one MC of India right now. Because I think you have to grow. आप एक speech हर show में नहीं बोल सकते हो. Yes. So I think that was something which helped me. My education helped me because I could see the world very differently. And obviously you'll outshine other people when you are little intelligent and you have knowledge. I think by the end of my MBA, I got a job into a very reputed company. I'll tell you, it was TCS. And Okay. it was a dream role. I was the only one getting selected. गांधीनगर में? हाँ, like, so I gave my interview in Gandhinagar, but I was placed, I think, in Coimbatore for a few months for training. And then I wanted to choose to go to Bombay because somewhere it will also help my career. And probably Bombay has a better crowd, so I'll get better exposure. गुजरात से ज़्यादा मिलता है बॉम्बे में क्राउड, एंड ये मुझे लगता है इंडस्ट्री कि में. वो ये इंडस्ट्री में भी और कोई भी इंडस्ट्री में, it's the hub of any bigger city, Bombay, Delhi, Bangalore. So Mumbai was a choice because वो गुजरात से भी नज़दीक है. So मम्मी पापा को जब भी मिलना हो, you can rush to them. मैं इंजीनियर हूँ, इसलिए अब मैं पूछना चाहता हूँ कि TCS में वर्क कल्चर कैसा है, वो कैसे, अगर आपने वहाँ पे टाइम बिताया हो तो. So coming to your question, I had a job. जॉब में मुझे फाइनल कर दिया. लाइक I got the job. Same time पे I get a call from this director saying, "Hey Bhakti, I'm making a film, and I'm sending you a script. Would you like to do it?" And this is my third film approach. You know, a third director approaching me for a film. 2 को तो मैंने मना कर दिया था, thinking नहीं यार, I'm not ready. And I
to be honest, even I did not trust Gujarati industry because हम जो देख रहे थे अभी तक, it was very different from, it was not wrong or it was not bad, it was different from me and this generation. So probably I thought मैं justice नहीं दे पाऊंगी. And yeah, I think the director approached me and I said, you need to speak to my parents. अगर उनको अच्छा लगेगा, if they think it's right, I'll do it. So then we had this meeting at my dad's workplace. Baroda ke baaju mein there is this cancer hospital where my dad works, Muni Seva Ashram. And the director came there with this presentation and with the list of actors performing. I think few of our films were the game changers. कौन सी मूवी थी? बस एक चांस. I वो don't know. डायरेक्टर वाली थी या हाँ, वो director वाली, स्क्रिप्ट समथिंग वो भी बता Director, रहे थे हाँ, सबको director है ना? वाली, yes, it's बस एक chance. We had the first motion poster before Bollywood. So I think the film was beautiful. So I think Keyur Tejash, Bayar, and I think one more film were already produced. They were released, and next was our bus ek chance. So I think these 4-5 films kind of changed the industry. We got better with, you know. आपने 2 फिल्म केवी तेजस नहीं, भैया मैंने नहीं किए. हाँ मैं नहीं, अरे हाँ। how I wish, अभिषेक. So वो 2 रिलीज हो गई थी और उसके बाद हमारी रिलीज हुई. So ये 3-4 फिल्म were the example that now the films can look, Gujarati films can look better. So and after that there was no looking back. I did Vitamin She. Start में मैंने सोचा कि मैं maximum films करती हूँ because I don't have film background. I don't have any connection to any people who can help me get into films. So the best way of being in this industry is to give chances to other new directors and keep working. When you keep working, people will keep noticing you. Also, ये आपकी on job training है जो आपको बिना पैसे दिए आपको सिखा रही है और आपको पैसे भी दे रही है. Obviously, initial few films were struggle, but I think after that I kind of learned my art because कोई सिखाता नहीं आपको वहाँ जाके. Everybody is busy doing their part and जो dialogues लिखे हैं script में उसके अलावा भी you have to put your input to kind of वो make भी the डालना character पड़ता है better. स्क्रिप्ट में मतलब जो वो डायलॉग लिखा नहीं होता है, कुछ जो अंडर द लाइन कुछ ऐसे इशारे कुछ ऐसी बातें जो आप कर लेते हो बिकॉज यू आर अ ग्रेट एक्टर, वो लिखा नहीं होता कहीं पे. मतलब ऐसा नहीं लगता है कि आज मैं चाय पीने वाला हूँ एंड देन वो लिखा होता है वो बोलना होता है हमको ऐसा फिर नहीं प्रॉपर लिखा होता है कि हाँ तो મને ચાય પીવી છે તું મારી જોડે આવીશ. બટ around that also you can do so many other things that say for example you're flirting with somebody or you like somebody that હું વિચારતી હતી કે આપણે બંને કશે જવું જોઈએ, ચાય પીવા આવીશ. यस You know, like, so like certain things are not written and that I think any person would get only with experience. मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी ऐसे बातें होती जो आंखों से आप कह देते हो तो फिर उसमें लफ्ज क्यों. यही पर लेकिन आपने जो बोला ना कि केवी तेजस बेयार या एक्चुअली वहाँ से ही मैंने स्टार्टिंग की थी गुजराती अर्बन मूवीज देखना. केवी तेजस इज फर्स्ट मूवी, फिर बेयार, फिर बाद में तो छिल्लो दिवस आया था मैंने देखा था. लेकिन उसके वो और जो मूवी आ रही थी जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे मेरी मम्मी भी ले जाया करती थी, मेरे भाई को ले जाया करती थी कि ये मूवी है दादा देश रे जो या परदेश. वो सब मूवी उस टाइम पे हम देखते थे, बीच में नहीं देखा कुछ भी गुजराती मूवीज. एंड देन केवी तेजस वो सॉन्ग थे उनके बेस्ट फिल्म. everything I think everything about that film Bayar was a masterpiece and still I think it is till date my favorite Gujarati film. So I think बहुत लोगों की मेहनत लगती है फिल्म बनाने में. आप सिर्फ हमें देखते हो, डायरेक्टर को देखते हो, but then there are these lightmen and there are this makeup artists, stylists, there's so many people, editors, so many people involved to create this baby. And thank you, I would like to thank all the audience कि आपकी सपोर्ट के बिना तो ये इंडस्ट्री आगे जा ही नहीं पाती. And now I think we are crossing borders and how and we are celebrating our culture. 20 दिन में 25 करोड़ and then Yeah, I think it. My favorite movie is चाल जी विले. चल जी भी ले. चाल जी विले. Yeah.
वो बहुत अच्छी लगी थी मुझे। It was beautiful, yeah. वो अभी भी चल रही है थिएटर्स में। Because it's beautiful. आपको क्या लगता है अभी गुजराती इंडस्ट्री कैसी, फ्यूचर क्या है उसका? I think Bombay से अच्छे अच्छे directors और DOPs they are coming to Gujarat to make Gujarati films. हमने नेशनल अवार्ड जीत लिया in how many few आपकी years? मूवीज ने भी बहुत ही नेशनल अवार्ड तो नहीं पता है मुझे, लेकिन अवार्ड्स बहुत जीती। हाँ, मेरी मूवीज ने अवार्ड जीते, मैंने नहीं जीते. That's a मैं नाम भूल गया, सॉरी, लेकिन वो यार मैं भी भूल गई. विटामिन शी won quite some awards. नहीं, उसके बाद में आई थी। I don't go to award functions and award nights. मैं I भूल गया, think नाम भूल गया, आई थी। I think for award nights for me is just a get together and it's a time to meet friends. उसके बिना भी मिल सकते हैं तो फिर. आपने उसमें टीचर का रोल किया था। Oh yes, wow. मने लई जा. Yes, तू मने ले जा। मने लई जा, yeah. So yeah, a very beautiful script again. Girl child adoption की बात हो रही थी उसमें और मुझे लगा कि मुझे ट्रॉफी नहीं बनना है कोई भी फिल्म में. तो if you'll see the choices of films I've done, it is very different from the rest. हमेशा वो अलग करने की तलब जो थी, that made me actually experiment. And I think I've chosen roles over directors. So now I'm kind of trying to balance both. Good directors and good role. Only then. आप ऐसा भी लग रहा है कि गुजराती इंडस्ट्री में अभी एक्शन कुछ जैसा बड़ा होना चाहिए अभी? होगा. I think it's going to happen and Gujarati industry is going to grow like nobody has imagined. बहुत सारे अच्छे एक्टर्स आएंगे. जो लोग मुझे देख रहे हैं मैं उनको बताना चाहती हूँ that you don't have to be a stars kid. You do not need a godfather to get into this industry. अगर आप अच्छे हो, people will accept you with open arms. You know, that is what they've done to me. They've accepted me who is not from a filmy background, yet they've given me so much love and I can be nothing but thankful. आपकी नेक्स्ट अपकमिंग मूवी? So अब I have become very selective honestly because मुझे लगता है कि a lot of time, energy and efforts हम देते हैं एक फिल्म बनाने के लिए, तो फिर चॉइस शुड बी कि स्क्रिप्ट अच्छी हो और प्रोडक्शन हाउस अच्छा हो और डायरेक्टर अच्छे हो. फॉर मी द हीरो इज़ दैट. सो मैं हमेशा कभी भी मैंने कोई भी स्क्रिप्ट सुनी है, आई वुड ऑलवेज आस्क हु इज़ द डायरेक्टर. आई वुड ऑलवेज आस्क स्क्रिप्ट, मुझे वो स्क्रिप्ट दो. उस बेसिस पे आई चूज़ अ फिल्म एंड नॉट ऑब्वियसली द ए-लिस्टर्स. मेरी हिंदी फिल्म आ रही है अभी, कलर्स ऑफ लव, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. I know I'm not a great actor and I'm trying to be one. It's a learning process. But गलतियाँ मैं भी करती हूँ छोटी मोटी इधर उधर. But I think ये performance देखे finally I'm happy. I'm content and I'm satisfied with my ये होता है ना performance. कि ये वाला वीडियो, जैसे कि हम पॉडकास्ट भी बनाते हैं, फिर वीडियो भी देते हैं, फिर कुछ ऐसे वीडियो होते हैं कि ये वाला अच्छा लगा. हम खुद जज नहीं कर पाते. हम कई बार होता है कि मैं खुद शूट करता हूँ, पॉडकास्ट शूट करता हूँ, देन वो मैं खुद देखने का ट्राई करता हूँ, फिर बाद में बोरिंग होता है, मज़ा नहीं आ रहा है. Even I can't watch my films and I'm like, Arey, this is a wrong thing. That means there's something wrong. So there are times people disappoint you. There are times you disappoint other people, and that's the circle of life. In between you have to find a solution, make something beautiful. And मेरा goal सिर्फ films बनाना नहीं है. I think I've gone to a very different zone of spirituality and understanding of life, where I feel I have to do something different and make difference in this world. The reason why I've been born here is not just to make films or be a part of the mega blockbusters. I want to do different. I want to do something beautiful for our universe, our earth. So I think eventually I'll get into that. I'm this girl with this emoji, with the yoga emoji. Peace. हमारे यहाँ पे जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम. ऐसा फेस आया कि लॉट्स ऑफ डिप्रेशन एंड फियर, क्या हुआ था? Fear, obviously you have fear of so many things. Fear of earning, fear of losing your loved ones, fear of being judged, fear of not being successful. I think we all live in fears. And I think
uh, when you accept your fear, I think that's the first step towards addressing the fear, towards challenging the fear and saying, hey, you know what? I'm better than this. So I think, yeah, I have fear of everything. There are times, और मेरी लाइफ में रॉन्ग, और सबकी लाइफ में गलत होता है, वो 10% 20% छोटा मोटा रॉन्ग होता है, या तो देर इज अ बैलेंस. इन माई लाइफ देर इज नो बैलेंस. तो जब गलत हुआ है तब इतना गलत हुआ है कि साइंटिस्ट के पास भी दे डोंट हैव अ सोल्यूशन, और डॉक्टर्स के पास देर इज नो सोल्यूशन. सो बहुत सारा ऐसे कुछ गलत हुआ है. People have done wrong to me, and you have so much of anger that मैं तो अच्छी थी ना, I've been kind to you, I was there for you, and then why not? So either you keep fighting and crying, and there's this other part where you wake up one day and say, you know what, there's only one life, and I cannot let this life go waste. It's part of life, where you will get the learning, and that's destiny. You cannot change that. What you can change is yourself. And I know this looks like a lot of motivational spiritual talks, but when you've gone through a lot of things, you see the world differently. यानी लोग अभी झगड़ते हैं ना, तो मुझे लगता है कि क्यों इतनी छोटी बातों पे झगड़ रहे हो ना. चूज योर बैटल्स, एंड बैटल्स आर रियल बैटल्स. व्हेन योर लव्ड वंस आर सिक, व्हेन घर में ऐसी बीमारी आती है जिसका कोई इलाज नहीं है. The world doesn't have a cure for that illness, and your loved ones are in the ICUs for not a day or two, for months. So then there is financial pressure. Emotionally, you are like broken. You're fighting God, universe, you're fighting the doctors, you're fighting the world, and you're like, either I waste my energy into that, or probably I gather all the energy, little bit जो भी बचा है, और मैं solution लाने में मैं आगे बढ़ूं. ये My body would shiver. मतलब ये जो फेस होता था, वो रिलेशनशिप में था या करियर में? सभी चीजों में यार. like people can go bad, and when things go bad, it goes downhill. और मैंने देखा भी है, like, let me be honest to you guys here that this time, जिस एरा में हम रह रहे हैं ना, nobody is happy for क्योंकि anybody. 25 26 27 देन रिलेशनशिप में लोग डाउनफॉल देखते हैं, क्योंकि उसमें टाइम पे सॉरी Yeah, the body language goes. मैरिज हो जाते हैं, फिर ब्रेकअप हो जाता है, उसके बाद फिर करियर आता है, फिर उसके बाद भी फियर रहता है. हाउ कैन वी डील? See, depression is a real thing, and it is the worst phase anybody can be in. तो मुझे भी लगता था कि मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ यार, मैंने इतने साल अपना करियर अपने आप में आगे बढ़ी हूँ, हैव नॉट हैड एनीबडीज हेल्प. डिप्रेशन होता होगा, बट आई थिंक दैट्स मेंटल, प्रॉब्ली इट्स ईजी. इट इज़ बैड. देर आर डेज यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ योर बेड, और रोना कभी भी आ जाता है. मैं डांस भी कर रही हूँ और मैं रो रही हूँ, एंड you have no control over your emotions. So it is only right people around you who's going to help you get out of this. So कभी भी आपको, कभी किसी को भी लगे कि यार आज बस हो गया, लाइफ ख़त्म, अभी कर लिया सबके लिए, अभी मुझे वो I want freedom from all the fears, freedom from all the judgments, तब call your loved ones. Don't take any silly decisions, because this life is way more beautiful than the silly thoughts that we have, or the silly people that are around. मुझे हमेशा सब लोग बोलते, भक्ति तुम तो बहुत बिजी हो, हमारी पार्टीज में नहीं आते हो, हमें चाहिए, तुम तब नहीं होते हो. बट भाई पैसे कमाने हैं मुझे, आई वॉन्ट टू वर्क. मैं काम नहीं करूँगी तो देयर विल बी नो ब्रेड एंड बटर ऑन माई टेबल. And it's been 11 years I'm taking care of my, or maybe even more, I'm taking, after I think I went to college in Bangalore, I'm taking care of my expense. And not only my expense, but everybody's expense around me. And I think it's tough. Bollywood, Hollywood, Goal to just make great content. I should be able to entertain people, to be a nice soul. I'm holding it to that, and
make a difference in this world. Bhakti Kubavat did not came to the world to just be a mere actor, or and being also an actor is a nice thing because we influence so many people. लेकिन मुझे कुछ अलग करना है और मैं करूँगी, मुझे पता है, and मैं I know it. आपने होस्टिंग की, मॉडलिंग की और एक्टिंग की, तीनों में से बेस्ट कौन सा है? सब, everything because everything gave me love, respect, money. लेकिन एक्टिंग में होता है ना कि जैसे कि हम अभी थोड़ा फ्रस्ट्रेट है, घर से ही फ्रस्ट्रेट निकले हैं, फिर एक्टिंग करनी है, फिर बाद में डायलॉग्स बोलने हैं, तो इसी के तो पैसे मिलते हैं बिकॉज इमोशनली यू हैव टू बी बैलेंस. रोने का सीन किया, उसके बाद एक कॉमेडी सीन करना है, तो वो जो इमोशनल ग्राफ है, पीपल से कि हमको बहुत फ्री टाइम मिलता है टू चिल, रिलैक्स, बट आई रियली फील दैट जो इमोशनल रोलर कोस्टर में हम जाते हैं वाइल शूटिंग अ फिल्म, इट ड्रेन्स यू आउट. आप इतने थक जाते हो, येट यू हैव टू लुक ब्यूटिफुल, यू हैव टू से योर डायलॉग्स राइट, आपको अच्छे से काम भी करना है, तो इट्स एन आर्ट. दैट्स हाउ वी आर कॉल्ड एन आर्टिस्ट. तो अभी आप बॉम्बे में भी, सॉरी बॉलीवुड में भी जा रही हो, नेक्स्ट फील्ड आपकी आ रही है, तो ये जो जर्नी होती है एज अ वुमन, एज अ गर्ल, तो आपको कभी फियर एंड इनसिक्योरिटीज फील होती है इस इंडस्ट्री में क्या? क्योंकि हमारे घर पे तो जो चलता है गुजराती में, ये नहीं करना चाहिए भाई, एक्टिंग कहाँ पे, क्या होगा तुम्हारा फ्यूचर, इंडस्ट्री कैसी है, Yes. ये होता होगा, वो होता होगा. राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि मेरी फैमिली बहुत ही सपोर्टिव थी. सो कभी भी मुझे उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि ये कपड़े मत पहनो, या तो यहाँ मत जाओ, ये मत करो. देव ऑलवेज बिन प्रोटेक्टिव, बट देव ऑलवेज बिन सपोर्टिव एज वेल. तो दैट हैज़ बिन माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ. एंड फियर होता है ना, हर कोई नई चीज़ हम करते हैं, दिल से करते हैं, तो आपको तो वही है कि लोग, ऑडियंस दिल से एक्सेप्ट करें. फियर ऑफ बीइंग जज्ड कि लोग कमेंट क्या करेंगे, क्या बोलेंगे. सबसे ज्यादा वही लोचा आप होता है. वही, या लाइक आप जो ऑफिस में काम करते लोग, आपका काम या तो आपके पियर्स देखेंगे या तो आपके बॉस. आवर वर्क इज आउट देयर फॉर पीपल टू जज एंड कमेंट ऑन. एंड हम कहाँ बोल रहे वी आर द ग्रेटेस्ट एक्टर्स. वी आर ट्राइंग, एंड वी आर ट्राइंग टू जस्ट एंटरटेन यू. वी आर जस्ट ट्राइंग टू मेक बेटर content for you guys, so it's always a try. मुझे हंसी आ रही है, लेकिन मैं बताता हूँ क्यों आ रही है. क्योंकि जब मैं मान लो कि अभी जवान चल रही है, शाहरुख खान सुपर हिट, एंड मैं फ़ैन हूँ बहुत ही, लेकिन जब वो उसके पहले जब जीरो आई थी ना, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी जीरो में. लेकिन कमेंट देखो यार, क्या लिख रहे हैं लोग. फिर अचानक से जवान आई, उसके बाद क्या लिख रहे हैं लोग. आप जैसे एक्टिंग की दुनिया है, हाँ, जयंती भाई जोरदार, जयेश भाई जोरदार, राइट, माय फेवरेट मूवी. Yeah, I have not watched it. I have to. गुड मूवी, बहुत ही अच्छी है. डायरेक्टर दिव्यांग, Divyang, yes. वो क्या वर्क किया था उन्होंने, बहुत ही. So I just feel कि एक तो बहुत ही नेगेटिविटी है. People need to like just loosen yourself, chill and go with an open mind. And सब बोलते oh we don't judge, we are very simple people, but you judge. मैंने तो वो भी देखा है, जवान मूवी में जो डायरेक्टर है अटली, है ना, तो उनकी बेचारी शादी हुई थी, फिर क्या जज कर रहे थे लोग, अभी क्या लोग जज कर See, रहे हैं. these are people who do not have spine, first of all, and do not have guts to come in front of you and talk to you. पीठ पीछे तो सब बात करते हैं. तो a real person is, or somebody who is truthful and who's honest, I think वो आपको सामने से बोलेंगे, देख भाई, I like you as a person, but ये बराबर नहीं है. वो ट्रोल करना, गालियाँ देना, it's not a cool behavior, and I think people should understand. फिर बाद में जो आर्टिस्ट होते हैं वो काम करके दिखा रहे, अटली, शाहरुख खान, एंड देन फाड़ दिया सब. वो कमेंट्स की वजह से वो नहीं काम करते. They also somewhere know that they have not performed well, or the film has not come out well. Performance तो दी दिया, लेकिन editing बराबर नहीं हुई. So they all know, they all are aware, but यार, like don't just target us, like don't do that, like we are human. लेकिन वो भी होता है ना कि
आपको सभी जगह से हेट मिल रहा है, फिर वो मोटिवेशन ही खत्म हो जाता है। यार या अभी तो वो रहने दो यार, नहीं करना है, लोग गालियां दे रहे हैं होता मुझे। है, लेकिन वो आप क्रिटिसिज्म को कंस्ट्रक्टिव वे में यूज करो. हम्म सी ऑडियंस आर नॉट फूल्स एज वेल, सो वी हैव टू रिस्पेक्ट उनको. अगर वो फीलिंग आई है तो वो फीलिंग गलत नहीं आई है. ऑब्वियसली द वे दे हैव टू प्रेजेंट शुड बी बेटर. बट हैविंग सेड दैट, जब प्यार आता है तब इतना प्यार आता है, तो इट ऑलवेज बैलेंसेस आउट. And I feel even I watched Jawan, and Shahrukh Khan has done a fab job. At this age, he's showing a dedication and passion of probably a 22-year-old boy. And this is what I have to learn from him. He's a true star. He's the King Khan. And there's a आपको reason काम why करने he का is. मौका मिले तो? मैं कुछ भी कर लूं, like I know we have to. The choice of words should be very important. I want to be the lead actor next to him. I would aim for that, but any role with him, I would do it with all pride, just because I want to know him as a person. I want to sit next to him and just listen to his stories. He would have had so many amazing stories and experiences. वहां से कुछ अगर सीख के चार्म वापस बहुत ही आ अच्छा जाओ. है यार। अरे यार, very, I think he's a good person. Like, उनको इंटरव्यू में बोल रहे हैं ना, हमें he's मुझे very intelligent, he's very witty. I think he knows his game, and he's very respectful. मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है. Like, somewhere, he has given a definition of how a man should be. You should respect. You should take care of people around you. You should take responsibility. So कहीं ना कहीं वो stereotype boys जो होते हैं, नहीं मिले चाय बनाओ, लड़कियां तो घर पे ही रहनी चाहिए, से दूर, where he's saying, my films work because of my women, my female leads. Everything about him I like. I love. वो मेरे फेवरेट कपल है, और रितेश और जेनेलिया, Yeah, Ritesh और Janila. I think they're very cute. They're very nice. They're themselves. रील्स में बहुत ज्यादा देख रहा हूँ। ओके, तो किंग खान तो किंग खान ही है। अभी हम रैपिड फायर राउंड करेंगे आपके साथ। चलो, I think this is my favorite segment. स्टार्ट करते हैं। 7 क्वेश्चंस है। तो फर्स्ट, विच इज योर फेवरेट मूवी? हिंदी, इंग्लिश, anything, कोई भी. हिंदी में बताओ पहले। मूवी से बेटर आई वुड से, सो बर्फी इज वन फिल्म आई लाइक. इफ यू हैव टू से फिल्म, बहुत सारी फिल्म्स हैं. ये जवानी है दीवानी, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे. आई एम दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन. बट आई थिंक इफ यू हैव टू पुट फेवरेट, so I really like this series. It's called Saas, Bahu and Flamingo. I think one series which is package of everything. Great गुजराती acting. वाली थी Amazon Hindi. You have to watch. मैंने पता Saas, है, मैंने Bahu देखी or नहीं है। Flamingo. You have to watch this. And in that series, सब ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है. सबके कैरेक्टराइजेशंस बहुत ही अच्छे हैं. बैक स्टोरी बहुत अच्छी है. डायरेक्टर हैज डन अ गुड जॉब. DOP has done a fab job. Edit is amazing. वो एक ऐसी सीरीज थी जहाँ पे मैं अगर बैठूं कि मुझे मिस्टेक्स निकालनी है, आई थिंक तो भी मैं नहीं निकाल पाऊंगी. इट हैड टिक ऑन एवरी बॉक्स एंड आई वॉज एंटरटेन्ड, आई वॉज इंस्पायर्ड. नहीं यार, इसे एक्टिंग कहते हैं, इसे परफॉर्मेंस कहते हैं. आई थिंक वो राधिका है ना उसमें, राधिका। I don't know like names, but now या मुझे पता चल गया, मैं वो सब देखता हूँ। And in English, I would say Ozark. I think that is one series where, again, storytelling amazing. Director और actor same था, तो he showed his caliber and performance. बहुत कम dialogues में बहुत कुछ बातें हो जाती हैं, which is my way of filmmaking, जहाँ पे 2 लाइन की ज़रूरत है, वहाँ पे आप एक पैराग्राफ नहीं डाल सकते. और I mean, so I think simplicity yet proving your plot, placing your actors right. So I और think गुजराती में Gujarati में विटामिन सी। no. I mean, of course, I would love my good films. Vitamin, she was good. Jesu Jordar was very good. I would say Beyar and Helaro. I think these 2 films. हिलारो इज। Yeah. और बीच में भी बहुत सारी फिल्म्स आई जो मुझे देखनी थी, बट समवेयर उनको इतना रिस्पॉन्स नहीं मिला, और वो एंड फिर मैं OTT तक जा नहीं पाई, बिकॉज आई हैव लाइक 3 प्रोफेशंस पैरेलली गोइंग ऑन.
मॉडलिंग एंड देन एंकरिंग एंड ऑल्सो एक्टिंग. सो कहीं ना कहीं कम टाइम मिलता है, और उस कम टाइम में यू वांट टू वॉच द बेस्ट परफॉर्मेंस और बेस्ट सीरीज और बेस्ट फिल्म्स across the globe. So it's always a challenge. मूवीज और सीरीज. Movies in the theaters, series at home. सेकंड क्वेश्चन, प्यार क्या है? Wow. Uh, it's about nurturing that person, letting that person fly, respecting, and it's about right partnership. It can be with your mother, your sister, boyfriend, husband, but I think it's a soul connect mainly, and I know what that is, and that is what love is for me. It's selflessly just giving yourself, that I only know to love like this, wildly, madly, truly, deeply. I don't know anything in between. So even my friendships are like that. Even I'm very emotional, so I'm very emotionally connected. तो प्यार की परिभाषा तो बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन मेरे लिए मॉम डैड. ગુજરાતીમાં કહું ને તો આમ નિસ્વાર્થ પ્રેમ. નિસ્વાર્થ પ્રેમ, એમના જેવું પ્રેમ જ નહીં, આઈ થિંક. અને મા બાપ અને એને કહ્યું ને કે ટિફિનમાં 2 રોટલી ભરવાની તો ના 3. 3 રોટલી. હા, હજી વધારે ખા, જાડો થા હજી જા. હા, હજી હું હમણાં જ ઘરે ગઈ અને મને મમ્મી કહે કે ખા 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 ખા. એન્ડ આઈ એમ શ્યોર આપણે બધા ક્યાંક થોડા ઇરિટેટ પણ થઈ જતા હશે મમ્મી પપ્પાથી કે કેમ આવું આખો ટાઈમ ખાવાની વાતો કરે છે. બટ ધીસ ઇઝ ધેર વે ઓફ શોઈંગ લવ. So I think accept it and respect your parents, man. Love them, and when they're growing old, be with them. You boys, you're lucky to be with your parents. We girls don't have choice. Modeling, acting or hosting? Favorite? I want to say all three because I'm good at all three. But I think recently मैंने लंदन में एक ड्रामा किया. For the first time, I did a commercial play. Okay. Very interesting story where the female lead was given 6 months of training. और उनको यूके का वीज़ा नहीं मिला, and मेरे पास यूके का वीज़ा था. So the producers like, Bhakti, can you please help me? ये अभी बस 10 दिन बचे और मुझे यूके में शो करना है. Now the character was of a deaf and dumb girl. जहाँ पे she has to learn all the sign languages. She has to deliver monologues. And also my first time in a commercial theater. Wow. And I was like, हाँ. और तभी 3 दिन पहले मैंने भगवान से वो मांगा था. आप पूछ रहे हो ना मैं भगवान में बिलीव करती हूँ कि नहीं, मैं बहुत बिलीव करती हूँ. So भगवान को बहुत स्पेसिफिक मैंने मांगा, भगवान I want to do something different now. I want to break that stereotype of Bhakti being the hot girl in the film, or maybe the eye candy, or maybe she's beautiful. You always push your acting skills. I want to prove my acting skills. और मुझे लंदन जाना है. I want a new environment. I just want to breathe and explore myself in a much better way. और 3 दिन के बाद मुझे कॉल आता है that I know this is a rapid fire and I'm still talking, but मुझे 3 दिन के बाद कॉल आता है कि भक्ति there's a play जहाँ पे मेन लीड को वीज़ा नहीं मिला और जो बैकअप लीड है उसके पासपोर्ट में पानी गिर गया. लाइक ये कैसे हो सकता है? So that means universe is working for you. मेरे एंकरिंग के शोज हो या मॉडलिंग हो या मिस इंडिया हो या इंडियाज नेक्स्ट टॉप मॉडल या इतनी फिल्म्स हो, इट हैज ऑल कम टू मी. दरवाजा नॉक किया. So the universe is sending that. And I'm a doctor's daughter. I believe in science but nothing else, but there are things which we don't understand. तो आप वो भगवान का नाम दे दो या फिर आप वो एनर्जीज बोल दो या यूनिवर्स बोल दो, whatever the name that you want to give, or maybe the angels or your ancestors, souls helping you, whatever that is. Right. If you think right, things will happen to you. I believe in energies. Which is your favorite city in Gujarat? जूनागढ़, सासणगीर. क्या मेरी परवरिश बहुत अच्छी हुई है और मैं इन रिसेंट टाइम्स खुद में देखा है आपने लाइन सी वहाँ पे? मैंने लायन के कप के साथ मैं खेली हूँ. मैं लाइक या प्लेड विद देम. जब भी एक इंसिडेंट था जहाँ पे
रात को पापा को फ़ोन आता है कि आई थिंक 2:30-3 बजे थे, एंड कि वो लायन का कब खो गया है और माँ से बिछड़ गया है, सो वी सेंडिंग द कब बैक, but if you want to see it, because my father used to serve um, all the people in the forest department, as he was the doctor of the forest department. तो just as a gesture, तब तो इतने rules strict नहीं थे, हमने मारन देखा है, like we've seen lions killing animals and like you know the whole process. मैं अफ्रीका से हूँ, so मैंने obviously I've grown up with animals around. I've you know the sustainability of life between living with and coexisting with animals. I've actually experienced that, and I can be कुत्ते को हाथ नहीं thankful. मतलब लगाते हम। Oh, it's the best feeling. It's best feeling. I mean, लेकिन being in जूनागढ़ में wild. तो फिरते ही है ना, मतलब स्ट्रीट में भी हाँ, होते वो हैं। घर तक आ ही जाते हैं। हमारे we had a farmhouse, and it was right in the border, like forest के border से start होता. There was a mountain coming down, and then there was this farmhouse. Every other day वो lions आते हैं, अब वो chill करते हैं. वो You know, भी है, it's a लेकिन cool जो scene. डॉग्स है, एंड देन मैं दूरी रहता हूँ, लेकिन जो कई बार वो रील्स देखता हूँ, और एक मूवी थी चार्ली, एक अच्छी थी डॉग के ऊपर, हाँ. उसको बाद देखने के बाद ऐसा लगता है कि यार एनिमल भी एक जो है ना वो निस्वार्थ प्रेम। Yeah, and especially dogs. If you have a dog, जिनके पास dog है उनको पता है that there's no love. Like they say there's no love like mom and dad. There's no love like a dog, you know. So ओके, selfless love is the best love to receive. विच इज योर फेवरेट गुजराती एक्टर? मल्हार, मल्हार, ध्वनित, यश और प्रतीक? question है. I'm going to be diplomatic and I'm going to tell you. See, I love all these actors for different reasons. ओके, काम मुझे जिस एक्टर का बहुत ही पसंद है, गुजराती एक्टर परेश रावल, ओ, प्रतीक गांधी, मनोज जोशी sir, like you know all of these people, I think I really नट सम्राट। aim to be like Gujarati female actors. Can I say Alia Bhatt? I think I can't give justice to this answer because मैंने बहुत लोगों की अभी recent films नहीं देखी हैं. So, but I love all these girls. These girls are like ruling it, and how. I loved Shraddha's performance in Helaro. I think that was commendable, and not only Shraddha's, जितने भी वो 11 लड़कियां थी, उन सब ने बहुत ही अच्छा काम किया. I love Arohi's work. She's a very natural actor. And I've not seen other people's work, but I really love them. I think we girls have more unity in Gujarati film industry, and somewhere we are very chill, you know. So Kinjal is good. She's a friend. So there's so many of these girls who are really doing a fab job. I think we all need right directors to kind of portray us right. फेवरेट फूड गुजराती? ઓળો રોટલો, ગાંઠિયા, ભાખરી બટેટાનું શાક, વઘારેલી ખીચડી. અરે, I think વઘારેલી I'm ખીચડી. proper ગુજ્જુ in this. અને તમે મને હજી પણ કહો ને કે તમને બહારનું ખાવું છે કે ઘરનું, તો I would still prefer ઘરનું ખાવાનું. હું બહારે જાઉં, I keep traveling. So the only thing, because I'm not from, because I don't get a chance to be in Gujarat, મારું ડેઈલી ખાવાનું દાલ ખીચડી કે દાલ રાઈસ જ હોય છે. અને જો જુનાગઢ અને સૌરાષ્ટ્ર આવો તો ઓળો રોટલો and chai. So I have chai with my meals, and that's an African thing. અમે બધા ત્યાં આફ્રિકામાં છે ને જમવાના જોડે ચાય પીતા હોય છે. So ચા રોટલા જોડે ચા હોય, પણ એટલે છાશ consider બી your હોય. chash as my chash, as in my દાળ ભાત chash જોડે ચા is તો નહીં ને? no. So my chash is my chai. મેં એવા જોયેલા છે કે દાળ ભાત જોડે બી ચા પીતા હોય છે, પછી આ મજા ના હોય યાર પછી. I know, but તમે મને જો ચાય માટે બોલાવશો તો હું હંમેશા yes કહીશ, yes. The one thing that I'm addicted to. तो मैं तो ग्रीन चाय. टी पीवड़ाई है। हाँ, तो તમે તો મસ્ત કહાવો પીવડાવ્યો. तो कैसा लगा पॉडकास्ट में? मुझे पॉडकास्ट बहुत ही अच्छा, मुझे पॉडकास्ट बहुत ही अच्छे लगते हैं बिकॉज if your voice goes through a beautiful channel,
I think people would want to know you. That ये इंसान बातें अच्छे कर रहा है, आवाज़ अच्छी है, तो ये कौन है? वो जो क्यूरियोसिटी देता है. I think that's one thing I love about podcasts. And any great conversation is good. Like आज अगर आप देखो तो हम बातें ही नहीं कर रहे. हस्बैंड वाइफ से बात नहीं कर रहा है, पेरेंट्स बच्चों से बात नहीं कर रहे हैं. देयर इज नो कम्युनिकेशन. और इस बीच में जब अच्छी कम्युनिकेशन होती है, देयर इज एक्सचेंज ऑफ गुड आइडियाज, गुड एक्सपीरियंसेस. सो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव ग्रेट कन्वर्सेशंस. कैसा लगा स्टूडियो और पॉडकास्ट? एकदम बहुत परफेक्ट. अच्छा. आई रियली होप एंड विश नथिंग बट द बेस्ट फॉर यू गाइज. And may you take secrets out of everybody, which you tried. But may you have great conversations. और may हमारी बात सुन के we are able to motivate at least few, if not all. Thank you. थैंक यू. All the best, you guys. Thank you, Keyur. आपके लिए है एक हमारी तरफ से छोटा सा गिफ्ट. आई होप कि आपको पसंद आए. Oh, thank you. Thank you so much. एंड प्लीज ओपन. मैं ओपन करूँ? अच्छा, ठीक है. Oh, this is so pretty. I think I'm gonna keep it. Probably I'm gonna gift it to somebody who loves me. But this is so beautiful. So yeah, you actually took my heartbeat away. Thank you. बट आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ दैट आपकी वजह से हमें एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे हम अपनी दिल की बात कर सकें और ऑडियंस के साथ और ज़्यादा कनेक्ट हो सके. सो थैंक यू. सुना योर वॉइस विथ केयर कड़िया. टेक केयर मैम. थैंक यू.